So this is the question number 7 from 2023 midterm evening session paper, and this question comes under the topic class 11th Python revision. So in this particular question, a string with the name of str has been given to you, and it has been asked out of the given function which one will convert this particular string into sentence case. So before going into the option, first of all we need to be aware sentence case क्या होता है. सेंटेंस केस बेसिकली क्या होता है कि कोई भी स्टेटमेंट है अगर आपकी, तो उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो क्या होना चाहिए, आपका कैपिटल होना चाहिए, एंड बाकी रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर इन द स्टेटमेंट शुड बी स्मॉल केस. तो जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं इसी स्टेटमेंट की, इस स्टेटमेंट के अंदर जो टी है वो क्या है, आपका कैपिटल है, बाकी रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स क्या है आपके स्मॉल केस. तो दिस इज नोन एज सेंटेंस केस. सो नाउ लेट्स सी ऑप्शन बाय ऑप्शन, ट्राई टू फिगर आउट विच वन इज द करेक्ट वन. तो अगर मैं बात करूं str.capital की, तो दिस वन इज आपको कोई फंक्शन ही नहीं है स्ट्रिंग के अंदर जो कैपिटल नाम से फंक्शन है. नाउ लेट्स सी कैपिटल फंक्शन क्या काम करता है आपका. लेट्स से स्ट्रिंग का नाम है आपकी कंप्यूटर साइंस, एग्जांपल के लिए वी हैव कंप्यूटर साइंस. ओके, सो अगर मैं बात करूं कैपिटलाइज फंक्शन की, तो व्हाट विल इट डू, इट विल कन्वर्ट इनटू द सेंटेंस केस. तो आउटपुट क्या आएगा आपका, कंप्यूटर एंड साइंस. ऑन दी अदर एंड जो टाइटल फंक्शन है क्या करता है आपका, इट विल कन्वर्ट इनटू कैमल केस. कैमल केस का मतलब क्या है कि हर वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर क्या होगा, आपका कैपिटल केस होगा. तो एग्जांपल के लिए इट विल गिव अस आउटपुट विल लाइक दिस, कंप्यूटर साइंस. यानी जो फर्स्ट वर्ड है आपका वो क्या होगा, आपका कैपिटल होगा. Hence, for this one, option number B is the correct one. Now, based on the similar concept, we have a practice question for you. You need to answer this one in comment box. What will be the right answer for this one? Okay, guys, then that's it for the day. If you have any doubt regarding this one, feel free to ask in the comment box. Okay, then. Thanks for your time.